हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चेजिंग द सी मॉन्स्टर। इस लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो फर्स्ट है, फ्रॉम द पैसेज फाइंड ऑल वर्ड एंड फ्रेजेस यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉन्स्टर। सो द फ्रेजेस एंड unearthly, unearthly animal, fearsome creature, animal, cetacean, sea animal, long, blackish body, curing violently, electric light, blazing, core of light, wrapped us in sheets of electricity, luminous dust, huge glowworm। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4, 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, रेफरेंस टाइम लेना है पैसेज से, और एक चार्ट बनाना है कि कब क्या हुआ होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। फर्स्ट, ऑल नाइट अलॉन्ग, पूरी रात क्या हुई होगी। द क्रू स्टेड awake and on alert। नेक्स्ट, मिडनाइट के करीब, नियर मिडनाइट, द monsters glow went out। then 12:53 am a loud hiss was heard। near to near 2 am the monster's light reappeared। next, daylight, the crew prepared for prepared for action। then around 6 am dawn broke, the electric glow vanished। 7 am thick morning mist surrounded the sea ship। around 8 am the mist cleared, visibility improved। next, 3/4 hour of chase, still no success in catching the creature। next hour, both ship and creature increase speed। next, around 10:50 pm, the monster
light reappear again. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ लॉन्ग डज होल इवेंट डिस्क्राइब इन दिस पैसेज टेक. कितना लंबा हुआ होगा पूरा जो इवेंट है. वर्क इट आउट बाय रीडिंग द पैसेज. सो मिडनाइट, मिडनाइट अगर हम देखें तो नियर 12 AM होगा. फिर देन 12 AM to 10:50 PM on next day. That is 22 hours and 50 minutes. About 22 hours 50 minutes the event was. स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है. मैच द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे मैच करना है. यार्ड क्या होता है. अ पोल स्लंग अक्रॉस द शिप. मास्ट से ई. मास्ट का डी आएगा, बो का जी आएगा, डेक ए, फोरकास्ट आई, स्टारबोर्ड एच, स्टर्म एफ, आफ्टर डेक सी एंड 4 में फिर डी बचा होगा. सो ई डी जी ए आई एच एफ सी डी. स्क्रीनशॉट ले लो. 4-5 का ग्रुप बनाना है. ये सेंटेंस को पढ़ना है. अपनी इमेजिनेशन से ग्रुप डिस्कशन की हेल्प से कुछ सिचुएशंस लिखनी है इन सेंटेंसेस की हेल्प से. सो दी आउटकम दैट इज disappointment, appointment and anger. After a football team loses a match, they should have they should have easily won when a student studies hard, but the exam results are. ये फर्स्ट हो जाएगा. ये सेकंड सेंटेंस हो जाएगा. रिजल्ट्स आर अनएक्सपेक्टेडली बैड. ये थर्ड सेंटेंस हो जाएगा. व्हेन अ प्रोजेक्ट गेट्स रिजेक्टेड आफ्टर weeks of work. Next, the hours of battle had sounded. First, just before an important exam begins and students open the question paper. Second, before a company present to investor in a high pressure meeting. Next, water chase. What a chase. First,
after running after a bus or train and barely catching it. Second, when a police officer when a police officer pursues a thief through crowded streets. Next, this was our chance. So, this was our chance to score the winning goal. Next, this was our chance to impress the judges. आप कितने भी sentences इस एक सेंटेंस से या एक फ्रेजेस से रिलेटेड लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आप ऐसे लिख सकते हो. स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ find the different unit of measurement mentioned in the passage and get more information about them from internet. Okay, so mile, cable length, feet, inch. First, mile. A mile is a unit of length in the imperial or US customary system. Second, cable length. वन माइल कितना होता है? वन माइल इज इक्वल्स टू 5280 feet. A cable length is nautical unit. So अगर हम देखें वन केबल लेंथ ये हो जाएगा 18.52 मीटर और अप्रॉक्स 607.56 feet. Now, third, foot. Traditional unit of length. Traditional unit of length. 1 foot is equals to 12 inches. Next, inch. Smaller unit of length in imperial or US system. One inch is equals to 2.54 centimeter. Next, fifth, our unit of time. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब है हमारी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? तो वर्ब को हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं. वर्ब को हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. सम वर्ब नीड ऑब्जेक्ट. व्हेन अ वर्ब हैज ऑब्जेक्ट इट इज ट्रांजिटिव. अब किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और अगर उस वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव होगा और अगर उस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे. जैसे अगर ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखें तो द फुटबॉल. द बॉय किक द फुटबॉल. बॉय ने मारा क्या? फुटबॉल को. देन
ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे गिव, कुक, बाय। इस वर्ब के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स लग सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। अब अगर इंट्रांजिटिव देखें तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ। जैसे वी लाफ्ड लाउडली, यहाँ पे लाफ के साथ कोई हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, वॉक के साथ नहीं पड़ती, क्राई के साथ नहीं पड़ती। तो ऐसे वर्ब्स होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सम वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, ये है इंट्रांजिटिव। चिल्ड्रन फ्लाई, काइट्स, ये है ट्रांजिटिव। तो कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें जिनमें दोनों इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव फॉर्म आता है। कुछ वर्ड होते हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारा लेसन 2.6 होता है कंप्लीट। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।